Assalamu alaikum dear students. We are going to discuss the formation of covalent bonds in case of examples. So I have taken the example formation of hydrogen molecule. So hydrogen exists in the form of diatomic state. So here I am going to explain you H2 molecule जो होता है इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स होते हैं. सो पहले आप क्या करते हैं, तो एटॉमिक नंबर इसका हर एक एटम का जिसका भी आप कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हो उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपका वैलेंस शेल पता चल जाता है और आप जान पाते हैं कि ये एटम कितने इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में शेयर कर सकता है. तो यहाँ पे जो इसका एटॉमिक नंबर है दैट्स 1. सो इसको क्या है, अब के शेल में इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए ताकि ये नियरेस्ट नोबल केस की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके. तो दूसरा हाइड्रोजन एटम का उसके के शेल में भी एक ही इलेक्ट्रॉन है. इसमें क्या हो जाता है, अगर आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे देखेंगे, सो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से हमें पता चलता है जो हाइड्रोजन एटम है इसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, प्लस अगर ये दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग करे एक इलेक्ट्रॉन की, तो उससे क्या हो जाता है, अगर दो इलेक्ट्रॉन इसके के शेल में आ गए तो इसने नियरेस्ट नोबल केस जो हीलियम है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 2 है, तो स्टेबल ड्यूप्लेट हो गया. तो ये ड्यूप्लेट हासिल करके नियरेस्ट नोबल केस कॉन्फ़िगरेशन तक पहुंच जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, दो हाइड्रोजन एटम्स जो है ये आपस में दो इलेक्ट्रॉन्स म्यूचुअली शेयर करते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है इसके के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, इसके भी के शेल में दो इलेक्ट्रॉन, तो बीच वाला जो बॉन्ड बनता है आप इसको रिप्रेजेंट H सिंगल लाइन H से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. सो इससे हमें पता चलता है जो दो हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान बॉन्ड है दैट्स ए कोवेलेंट बॉन्ड. सो टेकिंग यू टू नेक्स्ट एग्जांपल इज फॉर्मेशन ऑफ chlorine molecule. So when it's a molecule, it is combination of atoms, that is Cl2, chlorine molecule. So the atomic number of chlorine is 17. Go to its electronic configuration, it will be K shell contains 2 electrons, L shell contains 8 electrons and M shell contains 7 electrons. So its electronic configuration. This chlorine has 7 electrons in its valence shell, that's M shell. Therefore, it needs more 1 electron in the M shell to complete its nearest noble gas configuration. So, if it gains 1 electron in its M shell, it attains the nearest noble gas configuration of argon, so which is a stable noble gas. So, chlorine atom becomes stable by gaining 1 electron. So what happens here, if I represent it with the electron dot structure, it will be chlorine atom having 7 electrons in the valence shell. Another chlorine atom also has 7 electrons in its valence shell. If these two chlorine atoms share 1 electron of their valence M shell, what will happen? The two chlorine atoms, after sharing 1 electron each, becomes stable. So if I go on counting the electrons in the valence shell, now it is 2 plus 2 plus 2 plus 2. It will be the next electronic configuration. Here will be KLM. So next electronic configuration will be 2, 8, and it has now 1 electron that is shared by another chlorine atom. So M shell now contains, previously it was containing 7 electrons. By sharing electron with another chlorine atom, it has now become a stable chlorine atom. So another also contains now 2 plus 8 plus 8 electrons. So if you check 2 plus 8, 10 plus 8, 18. 18 is the atomic number of argon, which is a stable noble gas. So by covalently sharing the electrons of the valence shell, these atoms attain the nearest noble gas configuration. This is how formation of chlorine molecule takes place. Now on the other hand, we have another example here, formation of
ammonia molecule. It is NH3. Now, as per the rule, first we must know what is the atomic number of nitrogen. Atomic number of nitrogen is 7, so its electronic configuration will be K shell contains 2 electrons and L shell contains 5 electrons. So all the 3 hydrogen atoms, the atomic number of hydrogen is 1. So all the 3 hydrogen atoms contain 1 electron in the K shell. So if nitrogen atom contributes 3 electrons with the 3 hydrogen atoms, what will happen? Representing it with the electron dot, you will make it understand nitrogen atom contains 5 electrons in its valence shell, and all the 3 hydrogen atoms contain 1 electron in their valence shell. So what is the electron dot structure here now is that nitrogen will be the central atom. Okay, so these 3 electrons will be shared with the 3 hydrogen atoms, and the lone pair will be present at the top of nitrogen atom. So this nitrogen has shared electron with this hydrogen atom. So all the 3 electrons except this lone pair from the valence shell are shared now. The bond, these are shared pairs. If I write here, it's a shared pair. So what is not shared becomes the lone pair. Or simply you can represent it by N single bond, H single bond, H single bond, H, and here lone pair. This will be the covalent molecule of ammonia. Taking you to next example, formation of methane, which is also a covalent molecule, CH4 molecule. Atomic number of carbon here is 6. So write down its electronic configuration. इसकी जो electronic configuration है वो 2 और 4 है, तो इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है. सो इसी के बाद जो 4 हाइड्रोजन एटम है, इनके के शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है. तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन के के शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो चारों हाइड्रोजन एटम स्टेबल हो सकते हैं. तो एक कार्बन एटम के लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबल हो सकता है. तो यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पे अगर आपको समझा दूं, कार्बन जो है इसके लास्ट शेल में ये टेट्रावेलेंट है, ठीक है. इसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 हाइड्रोजन एटम के लास्ट शेल में 1-1 इलेक्ट्रॉन है. तो क्या हो सकता है, यहाँ पे अगर आप लेंगे कार्बन एक सेंट्रल एटम है, सो इसके लास्ट शेल के चारों इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ. सो जब ये चारों कॉर्नर शेयर होते हैं हाइड्रोजन के, तो एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल मीथेन मॉलिक्यूल बन जाता है. So all the 4 electrons that were present in the valence shell of carbon has been shared with all the 4 hydrogen atoms. The next electronic configuration, K shell 2 hydrogen, and that of carbon will be K shell contains 2 electrons and L shell contains all the 4 hydrogen atoms had contributed 4 electrons. So 4 plus 4 becomes 8. 8 plus 2 is equal to 10, that is the neon. So carbon has become stable, it has attained the nearest noble gas configuration of neon. Hydrogen here now becomes 2, which has attained the nearest noble gas configuration of helium. So hydrogen atoms also had become stable here. Carbon atom by sharing 4 electrons also becomes stable here. So when all the 4 electrons are shared, a new covalent molecule, methane molecule, is formed by covalent bonding. So write down the name of each covalent molecule that you represent by electron dot. It's a methane molecule. We can also represent it by C carbon, single bond hydrogen, single bond hydrogen, single bond hydrogen, single bond hydrogen.
So this single bond represents that carbon has mutual sharing of one electron with this hydrogen atom, and that of one electron with this hydrogen atom. So similarly, with all the 4 hydrogen atoms, it has shared 1 electron each. This was the electron dot structure of methane. So here all the students must have understood that what happens when 2 atoms or more than 2 atoms share electrons covalently. This is how all the covalent compounds and covalent molecules are formed by covalent bonding. Thanks a lot. Do not forget to like our channel and subscribe. Press on the bell icon present at the right corner of your YouTube channel, Sheikhul Alam Coaching Institute. Thanks a million.